Good morning, class 12th. This is our lecture 6 from chapter Principles and Processes, Biotechnology Principles and Processes. We have talked about till now endonucleases, enzymes. We have talked about vectors. We have now learned that how recombinants we can select it from the where from we can differentiate it from the non-recombinants, right? So how to make our host competent, these all things we have done. So basically we have mentioned every possible tool for which is used in biotechnology. The last tool which is left that we need in our process of recombinant technology, that is gel electrophoresis. Gel electrophoresis means we are using charge and by using a medium which is made up of a gel, and we are separating our DNA fragments depending on their size. The why what is the meaning of this technique? We are going to isolate DNA fragments. See, first thing, there is a mixture when you suppose taking a material which you want to extract out DNA, right? So you put your mixture in a few make a slurry, and your DNA is present in the mixture. How to separate out that mixture? That is our first point. That mixture, that fragments of DNA, there are the DNA fragments. How to take out those DNA fragments? We put chilled ethanol. We use chilled ethanol. So these DNA fragments, they precipitate and they come on the surface, they come on the upper portion of the tube. So in this way we can collect our DNA. How to separate them? This technique, gel electrophoresis, it was explained by scientist Tiselius, and it is a technique through which you can separate DNA fragments based on their size. We know that every DNA, it is made up of few base pairs, right? Those DNA which are made up of large base pairs, they will be heavy. Those DNA, suppose this is made up of 1500 base pair, this DNA, this sequence it is having 1000 base pair, so it will be smaller. So here gel electrophoresis is technique for us through which we can separate our DNA fragment, our fragment which is our interest, which fragment we need to transfer, right? So these fragments can be easily, they can be separated by using a technique, that is gel electrophoresis. Now we are going to start with our technique, how to perform. So I will give you here very simple flow chart, point to point, step to step. I am going to explain that how we are going to perform. First point is sample DNA, the DNA from which you want to extract out your fragment, your gene of interest. So your sample DNA is cut into fragments, and we know now very well that we, for cutting, we have molecular scissors which are known as restriction endonucleases. So these restriction enzymes, they are scissors. They will cut this DNA with a particular recognition sequence. They will cut DNA at its particular recognition sequence, right? We already discussed about palindromic sequence. They will recognize that sequence and then cut at a specific point. Now you have small DNA fragments. Many DNA fragments you are now got after cutting with restriction enzymes. Now this DNA molecule, these DNA fragments which you got after cutting, these all are negatively charged and they can be separated. Now how to separate them from each other? Once you force them to move towards a node,
क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हैं, तो अगर आप उनको पॉजिटिव साइड पे दे विल मूव, right? Anode is the positive side, so they will move towards positive charge under an electric field through a medium. Are you getting my point? कि DNA हमारा नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, हमें उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू अ मीडियम, यूजिंग अ मीडियम अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन सेपरेट आवर फ्रेगमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ साइज, राइट? वी कैन सेपरेट आवर फ्रेगमेंट्स with the different size. So commonly, as you can see, this is our apparatus of this is our apparatus which we use for gel electrophoresis. And this base, this green color base, it is gel, it is our gel. As you can see, this is our cathode, this is cathode and this is anode, and here are few wells जिसके हम अंदर अपना DNA सैंपल लोड करेंगे, एंड देयर वी विल पुट आवर जेल. दिस जेल इज एक्चुअली मेड ऑफ एग्रोज. This gel is made of agarose, and agarose is what? Agarose, it is a polymer of your carbohydrates. It is a polymer. It is polymer of galactose, D-galactose, as well as 3,6-N-hydrogalactose, and it is extracted from the special seaweeds. It is extracted from seaweeds. Seaweeds, they give rise to, they release agarose material through which we make our matrix, right? So from where do we get agarose? That is our seaweed. Now this the next point is loading of our DNA into wells. Loading of our DNA into wells. DNA into wells. So we are loading here our DNA into wells, right? These are wells, small holes in which we put our DNA. Now what we will do, this is our positive charge, this is our negative charge. So now our wells are ready with DNA. So where will DNA now travel? कहाँ से कहाँ move करेगा वो? Because it is negatively charged, so it will move towards positive side. So it is going to move towards positive side. Now when your DNA, it move towards positive side, DNA fragments, they can be separated out according to different size. Why? See, now you can imagine that here it is our gel that is made up of agarose. This agarose has small pores. This is having sieving property. Sieve का मतलब होता है pores. Now when DNA is passing through them with the current, right, with the electric field, now when this is passing, then the DNA is getting separated out depending on the size. Smaller is the fragment size. जितना जो भी small fragment होगा, it will move faster. It will move faster, and longer pieces, they will move slower. जितना हैवी, जितना लॉन्ग कोई फ्रेगमेंट है वो स्लो मूव करेगा, एंड शॉर्टर पीस दे विल मूव वेरी वेरी फास्ट. सो हियर नाउ दिस इज एक्चुअली दैट हाउ डज आवर DNA looks on the gel. This gel, as you can see, it is stained with this DNA, it is stained with ethidium bromide, and when you are stain them with ethidium bromide, now you can observe them with the UV radiation. So हम क्या करते हैं, सबसे पहले जेल बनाते हैं,
राइट उसमें जब भी डीएनए हम अपना डालते हैं दैट इज स्टेन्ड विद द इथीडियम ब्रोमाइड। उसको स्टेन करने से जब भी कभी हम नाउ वी कैन नॉट से इट विद द normal environment, we need UV radiation, so we expose our gel under UV radiation, and as you can see that our DNA fragments they fluorescent, यहाँ पे they are now shining. So this is the this as you can see this is our यू कैन से कि ये हमने अपने डीएनए लैडर क्या होता है जिससे हम अपने डीएनए जो फ्रेगमेंट हमने चाहिए उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। बेसिकली डीएनए लैडर इज़ ऑलरेडी बेसिस ऑफ डीएनए, ऑलरेडी हमें पता होते हैं जिनका साइज़ हमें पता है, ऑलरेडी नोन साइजेस, उसके बेस पे वी कैन मार्क आउट आवर बेस साइज़ कि हमारी जीन का साइज़ कितना है, राइट, एंड वी कैन सेपरेट आउट आवर सेगमेंट। सिंपली एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्या हो रहा है, हम अपनी डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर स्टेनिंग आवर डीएनए विद एथिडियम ब्रोमाइड डाई। उस डाई से क्या होता है कि कलर फ्लोरेसेंट बेसिकली कलर आ जाता है जब आप उसको यूवी रेडिएशन के थ्रू देखते हो। लार्जर फ्रेगमेंट्स एज यू कैन सी दे आर इन द अपर पार्ट एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं। नाउ दिस इज ऑलरेडी अ साइज ऑफ डीएनए जिसमें हर फ्रेगमेंट का साइज हमें पहले से ही पता है, वो हम फर्स्ट वेल में हमेशा डालते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि मतलब हमें अगर पता है कि दिस फ्रेगमेंट हैज़ 1500 बेस पेयर, दिस फ्रेगमेंट इज़ 1200 बेस पेयर, दिस फ्रेगमेंट इज़ 1000 बेस पेयर, सो नाउ आई कैन कैलकुलेट, आई कैन नाउ कम टू नो कि मेरा जो जीन साइज़ है वो कितना आया होगा। सो ये लैडर जो डीएनए लैडर है वो इसके लिए रन की जाती है फर्स्ट वेल में। सेकेंड वेल, थर्ड वेल, फोर्थ वेल में हम अपना मटेरियल ऑफ एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, राइट। अगेन ये सबसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ सारे पॉइंट्स दैट व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले हम कट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को, कट करने के बाद देन वी फर्स्ट मेक जेल बनाते हैं। जेल इज़ मेड अप ऑफ एग्रोज, राइट, एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। नाउ यू हैव योर डीएनए रेडी, दिस डीएनए इज़ पुट इनटू वेल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसमें हम अपना और वो डीएनए लैडर डालते हैं जिसके सारे साइजेस, ऑल साइजेस ऑफ जीन्स वी नो, तो हमारे फ्रेगमेंट्स डिफरेंट साइजेस के यहाँ आ जाएंगे। अब ये जो सेकंड वेल में हम डालेंगे ये अपना एक्सपेरिमेंटल डालेंगे जिसका हमें साइजेस पता नहीं है, राइट। Now third may be suppose second experiment, so these sizes they will give our sizes like this. Smaller fragments will be farther and larger fragment will be on the upper area. So now when your DNA it will move always from negative to positive side. Depending on the larger and smaller fragments you will get different size fragments. Now separated bands, as you can see there are the bands you can visible, it is visible on the gel, these are called DNA bands. So these DNA bands they can cut out from the gel piece and this is called elution. Basically ये मेरे जेल पे बैंड आए हैं, right, and I'm interested, this is my desired protein, I know its size, this particular size I will cut, ये मैं जेल से कट कर लिया. Now I will put it into the tube, and then into the elution supporting tray, and then we will perform our next step. So elution क्या है, cutting out your, इल्यूशन पूछा जाता है बेसिकली कटिंग आउट ऑफ योर डीएनए और डिजायर्ड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, द डिज़ायर्ड प्रोटीन जब वो सेपरेट आउट हो गया है फ्रेगमेंट, अब आपको पता है कि आपकी इंसुलिन जीन सपोज इट इज़ हैविंग 2000 बेस पेयर और ये 2000 बेस पेयर पे हमने यहाँ पे लैडर रन की है तो हमें पता है यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 1200 है. सो जो 2000 के सामने आएगी हम उसको अलग कर लेंगे. सो नाउ
उसको सेपरेट आउट कर लिया हमने. दिस स्टेप इज कॉल्ड इल्यूजन. सो रिजल्ट क्या है इस पूरी प्रोसेस का कि प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट जो आपने अब डीएनए अलग किया है, इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट. अब ये सेगमेंट आपका अलग हो गया. देन नाउ यू कैन पुट इट इनटू योर वेक्टर. इज इट क्लियर टू यू दैट ये डीएनए जो आपने सेलेक्ट किया है, ये पूरी कंप्लीट जीन में से सेलेक्ट किया है. एक बड़े से डीएनए फ्रेगमेंट से यू हैव सेलेक्टेड योर डिजायर्ड gene of interest. Now this is ready to carried by your vector. This is very important technique of gel electrophoresis. Please go through this technique very carefully when you are reading it. Please read it from NCRT also. You will get a very brief idea that what we are going to what we are talking about in this process, right? This is all about this technique. Next last process we are left